Good morning, everyone. This is Lalit Narayan Mato, and I'm going to teach Power Plant Engineering for the BTech 7th semester ME student. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. ओके सो अभी तक हम लोग डिस्कस करते आए थे थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, दैट मीन्स पावर प्रोडक्शन फ्रॉम द थर्मल पावर. ना अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है. दैट मीन्स पावर जनरेशन फ्रॉम द न्यूक्लियर सोर्सेज. सो बेसिकली इस न्यूक्लियर एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है? जो मेजर पढ़ना है, लेआउट, द वर्किंग ऑपरेशन, and different types of reactor. For example, PWR, pressurized water reactor, BWR, boiler water reactor, Kandu reactor, and etc. तो आज हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, लेआउट, वर्किंग प्रिंसिपल, PWR एंड BWR. रेस्ट हम लोग आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली जैसा कि नेम है न्यूक्लियर एनर्जी, दैट मीन्स पावर जनरेट फ्रॉम द न्यूक्लियर सोर्सेस. So in thermal power plant, what happened? Thermal power plant converts heat into electricity using steam. Thermal power plant convert heat into. सर आपका सभी जूम का दिख रहा है सर स्क्रीन में. Okay, एक मिनट. Into electricity using steam. गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग. आवाज आ रही है. So thermal power plant convert heat into electricity using steam. But in nuclear power plant or a nuclear power source, a nuclear power plant, the heat to make the steam is created when atom split apart, and that phenomenon is called, क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन सर. फ्यूजन.
fission, okay, not fusion, fission. अच्छा इसमें भी कंफ्यूजन है, फ्यूजन फिर बेसिक चीज ये सब। ओके, when two atoms combine together, that is called fusion, and when a big atom or a large atom split into two different smaller atom and that releases energy, that is called fission process. So basically हम लोग यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में हम लोग जो स्टीम को हीट करने के लिए क्या यूज करते थे, बॉयलर। ओके, एक्सटर्नली हम लोग क्या करते थे, हीट सप्लाई देते थे। यहाँ पे जो हीट जनरेट होता है थ्रू द फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, सारा प्रोसेस सेम रहता है, ओनली डिफरेंस क्या रहता है। अगर मैं एग्जाम बात करूं थर्मल पावर प्लांट का, कंडेंसर एंड दिस इज पंप। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस बॉयलर में क्या करते थे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते थे एंड देन इट्स स्टीम फॉल्स इन द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर सोर्सेस में ओनली इस बॉयलर की जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रिएक्टर, ठीक है। ओनली जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिएक्टर। एंड रेस्ट जो कंपोनेंट है वो सारा कंपोनेंट सेम रहता है। ओनली यहाँ पे हम लोग जो वाटर को यूज कर बॉयल करते हैं, दैट मीन्स स्टीम में जनरेट करते हैं थ्रू द रिएक्टर। So when atom split apart, they releases heat. When the process is repeated over and over, it is called chain reaction. So in a nuclear power plant, uranium is the material used in the fission process. Now the heat from the fission, okay, the heat from the fission boil water and create steam to turn the turbine. As the turbine spin, then the generator turn and its magnetic field produces electricity. So rest सारा process same रहता है as usual to thermal power plant. Now कोई रिएक्शन बता सकता है फिजन प्रोसेस का रिएक्शन? Okay, so basically what is nuclear energy? So energy that hold neutron and proton. That is called nuclear energy, energy that hold neutron and proton. So two ways of obtaining energy, nuclear energy क्या? First one is your, that is called nuclear fission. And second one is nuclear fusion. So basically जो हम लोग यहाँ पे जो सोर्स है, that means जो हीट यूटिलाइज करेंगे through the nuclear fission process. Nuclear fission. So nuclear fission
एनीवन कोई बता सकते हैं क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में? ओके सर सर हाइड्रोजन एटम जैसे कोई भी ये हुआ सर, मतलब एलिमेंट हुआ, वो एलिमेंट सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सर टूटता है सर। पहले वो ब्रेक होगा और एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एनर्जी रिलीज करता है, उसी को सर न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं सर। ओके ठीक है। सो इन न्यूक्लियर फ्यूजन हैवी न्यूक्लियाई दीज आर द बेसिक चीज, ठीक है, ये कोई नया चीज में नहीं पढ़ा रहा हूँ। हैवी न्यूक्लिया स्प्लिट इनटू टू smaller parts in order to become more stable. So what is the reaction for nuclear fusion? If we bombardment uranium 235 with a neutron, then its break barium 56 141 plus krypton then other neutron is produced plus energy. Now so बेसिक नॉलेज से आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन को हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? So inside a nuclear power station, energy is released by nuclear fission in the core of reactor. So basically हम लोग जो भी न्यूट्रॉन है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एनीवन को बता सकते हो? सर एक बार फिर से बोलिएगा सर, नहीं समझे। ओके सो चेन रिएक्शन, जैसे कि पता है न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। ओके सो वन बिग हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आगे हम लोग जो न्यूट्रॉन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टर्मिनेट कर देते हैं ताकि वो सर, और ये उसी प्रकार से सर वो कंट्रोल होता है सर। ओके इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्बर के लिए कुछ यूज करते हैं? कंट्रोल्ड आवर चेन रिएक्शन। नो आइडिया सर, नो आइडिया सर, सॉरी। कैडमियम एंड बोरेन रोड सुने हो? नो सर। नो सर। ओके सो आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूट्रॉन यूरेनियम 32 बॉम्बार्डमेंट होके बन रहा है दिस एंड अगेन दिस प्रोड्यूस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। सो ये क्या इस तरह से चेन रिएक्शन चलता रहेगा। सो फॉर दिस कंट्रोल वी हैव यूज कैडमियम और बोरन रॉड ओके टू एब्जॉर्ब दिस न्यूट्रॉन so that we can control the chain reaction. ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके सो 1 kg ऑफ यूरेनियम, अगर मैं बात करूं 1 kg ऑफ यूरेनियम can produce as much as the burning of 4,500 tons of high grade variety of coal.
Okay, so 1 kg of uranium 235 can produce as much as energy as the burning of 4,500 tons of high grade variety of coal. Okay, so that means कहने का क्या मतलब है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ठीक है, बट हमारे क्या है कि ये काफी कम अवेलेबल है इन आवर इंडिया में। और न्यूक्लियर रिएक्टर, so what is nuclear reactor? So a device in which nuclear chain reaction are initiated. Controlled and sustained at a steady rate. So this is called nuclear reactor. ठीक है, a device in which nuclear chain reaction are initiated, controlled and sustained at a steady rate. So nuclear reactor कहने का मतलब है जस्ट बॉयलर को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं रिएक्टर से। बाकी सेम जितने भी कंपोनेंट हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी हम डिस्कस करेंगे इच कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का। ऑलमोस्ट आपको सारा कंपोनेंट सेम मिलेगा, ओनली डिफरेंस क्या रहता है यहाँ पे, रिएक्टर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर में चेन रिएक्शन होता है और इस चेन रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी को हम कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम के लिए। ओके, सो लेआउट, मैं एक लेआउट शो कर रहा हूं। ओके, सो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या है, लेआउट है। ओके, सो थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या आपको यहाँ पे डिफरेंस, कौन सा पार्ट डिफरेंस है? सर कंटेनमेंट बिल्डिंग, यस, कंटेनमेंट, उसमें यूरेनियम फ्यूल रिएक्टर वेसल ये सब है। सो मेनली जो डिफरेंस अगर मैं बोलूँ ये पार्ट्स, ओके, ये जो पार्ट्स है ये केवल डिफरेंस है, दैट मीन्स कंटेनमेंट बिल्डिंग, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स मतलब चेन रिएक्शन होता है, दैट मीन्स यूरेनियम 32 थ्रू द एनर्जी प्रोडक्ट्स इनसाइड द क्या होता है, कंटेनमेंट बिल्डिंग के। तो यहाँ पे क्या, स्टीम जनरेटर, कंट्रोल रोड्स। ओके, इस कंट्रोल रोड का यूज क्यों करते हैं?
अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही कंट्रोल रॉड और सर कैडमियम रॉड और बोरॉन रॉड है सर, जो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है सर। यस, इसी को बोलते हैं कंट्रोल रॉड। और यहाँ पे क्या लिखा है, यूरेनियम फ्यूल सची रिएक्टर वेसल। तो कहने का मतलब है ये जो कंपोनेंट, ये जो मेन कंपोनेंट्स कंटेनमेंट बिल्डिंग, ये डिफर करता है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। बाकी सारा प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू स्टीम यहाँ पे आएगा टरबाइन में, देन इट कनेक्ट टू द जनरेटर एंड देन ट्रांसफार्मर, और इसको हम लोग फिर से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड में सप्लाई कर देते हैं। बाकी रेस्ट अगेन इट कम्स इन द कंडेंसर। ठीक है, देन वी कूल करके हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, इसको रिसर्कुलेट टू दिस कंटेनमेंट बिल्डिंग में, कंडेंसर देन पंप एंड देन कंटेनमेंट बिल्डिंग। दैट मीन्स ओनली मेरे जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्टर। ओके, जहां पे जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, और इस फ्यूजन प्रोसेस से जो एनर्जी यूज होता है इसको हम लोग यूज करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। सो मेन प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या क्या है देख रहे हो, कोर, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स, ठीक है, यूरेनियम फ्यूल, कूलेंट, बाकी रेस्ट टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सारा सभी आपको थर्मल पावर प्लांट एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट है। कूलिंग टावर, सो बेसिकली ये क्या लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ना न्यूक्लियर so basically a nuclear reactor so what is nuclear reactor? So nuclear power plant are very complex, so therefore there are many different building at the site and many different system. ठीक है, some of the system work directly to make electricity and some of the system work to keep the plant working correctly and safely. So all nuclear power plant have a contaminant structure, जो भी हम लोग देखे थे contaminant structure। contaminant structure that hold the reactor। okay, और इसी के इनसाइड क्या रहता है, न्यूक्लियर रिएक्टर रहता है, दैट्स होल्ड द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ऑल द पार्ट्स हैव deep pools where the nuclear fuel when it no longer be used can be cooled and stored। so all nuclear power plant make electricity from the steam created by the heat of a splitting atom। now so basic तो यही है कि split all nuclear power make electricity from the steam created by the heat of a splitting atom, but there are two different ways that steam is used। ठीक है, पहला क्या है, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, जिसको बोलते हैं PWR। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द स्टीम क्रिएटेड बाय द हीट ऑफ स्प्लिटिंग एटम। लेकिन जो हम लोग स्टीम को यूज करते हैं थ्रू द टू डिफरेंट वेज में, पहला क्या है PWR, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर।
प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ठीक है, ब्रीफ में इसको लिखते हैं PW बार, PWR। क्या करता है? दे कीप वाटर अंडर प्रेशर so that it's heat but does not boil. So water from the reactor and the water that is turned into steam in separate pipe and does not mix. Next जो उसको बोलते हैं, इसको BWR। ठीक है, ये दोनों का भी मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, PWR एंड BWR। BWR को बोलते हैं क्या? बॉइलिंग वाटर reactor. In brief, it is also called BWR. And in this case, water heated by fusion actually boils and turn steam to turn the generator. So in both type of plant, the steam is turned back into water and can be used again in the process. So basically the steam is used in two different processes. First is called pressurized water reactor and second BWR, boiling water reactor. ओके, सो ये दोनों को आप ध्यान से देखोगे, एक मैं वीडियो शो कर रहा हूँ प्रेशराइज वाटर रिएक्टर एंड बॉइलिंग वाटर रिएक्टर का। ओके, वीडियो विजिबल है? सर वीडियो चल नहीं रहा है सर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर लिखा हुआ है। ओके, वीडियो ठीक है, मैं चला रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था स्क्रीन विजिबल है या नहीं। हाँ सर, स्क्रीन विजिबल है। ओके, सर आवाज बहुत कम है सर। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर, आवाज कम आ रहा है सर, मतलब नहीं नहीं के बराबर है सर। Boiling water reactor. It is also known as the BWR. In this video, I explained the construction, advantages and disadvantages of BWR. So first we understand the constructions of the boiling ओके, water साउंड आ रहा reactor. है? In boiling water reactor, हाँ सर, आ रहा है सर। enriched uranium is used as a fuel. Okay. And water is used as a coolant, moderators and reflectors like a PWR. PWR means pressurized water reactor. Okay, means fuel is enriched uranium is used as a fuel and water is used as a coolant, moderators and the reflectors like a PWR.
Expect the steam is generated in the reactor itself instead of the separate steam generators. Okay, in a PWR the steam is generated in a separate heat exchangers. Okay, but in a PWR the steam is generated in the reactor itself. Okay, means the heat exchangers are not required in a boiling water reactors. The arrangement of the boiling water reactor power plant is shown in these figures. Now here you see this is a simple figure of the boiling water reactors. Okay, so this is the reactor, this is the reactor core, means the fuel and moderators are there, and this control rod is the reactor cores. This water is enter in this reactor, and this water is converted into the steam, means the water is absorb the heat energy produced due to the fission reactions. Okay, then this is a steam turbine, condensers, and this is a feed water pump. That is only 4 components are there. Okay, means it is a, suppose we compare this BWR with the Rankine cycles. Okay, so in a Rankine cycle just we need to replace the boilers by the reactors. Okay, then it is converted into these boiling water reactors. Means in a constructions you need to remember which fuel is used, that is enriched uranium, and water is used as a coolant, moderators, and the reflectors and its component are the reactor, steam turbine, condensers, and the feed water pump. Now we understand its working. The feed water circulated in the reactor is converted into saturated steam by transfer of heat release by fission in the reactor cores. So in a reactor core, that is a fuel, means the enriched uranium is there, moderator is there. Okay, so this fuel is released the heat energy. Okay, and this heat energy is absorbed by this feed water. Okay, and this feed water is converted into a saturated steam in the reactor itself. Okay, so here you see outlet from the reactor is the steam. Okay, in a PWR that is a water is coming, and this water is supplied in a heat exchangers, and from the secondary circuits the water is coming, and in a heat exchanger this water is converted into steam. But in the BWR this feed water is directly converted into the saturated steam. This steam is supplied to steam turbine working on the conventional power plant cycles, means the steam is enter in the steam turbines and the steam is expand and some mechanical work is produced. This mechanical work is supplied to the generators, and in the generator electricity is produced, and the outlet steam from the steam turbine is supplied in a condenser, and in a condenser the steam is converted into the water. This water is supplied in this feed water pump, and in a feed water pump pressure of the water is increased, and this feed water is again supplied to this reactor core. This way the cycle of the boiling water reactor is continuous. The mechanical power produced by the turbine is converted into electric energy by this generator, that we already understand. Now we understand the advantages, and the pressure inside the reactor vessel is less than the PWR. PWR means pressurized water reactor, means with respect to the PWR, pressure in a BWR means boiling water reactors are less. Due to these less pressures, the water is boiled inside the reactor. So we know that when the pressure is increased, then boiling point of the water is increased. Okay, so in a BWR the pressure is lower, so water is boiled, means water is converted into the steam in this reactor. Therefore the reactor vessel can be much lighter than the PWR and reduce the cost of the pressure vessel considerably. Means when this pressure is high, we need to use the larger thickness of the tube, or we are required the larger thickness of the shieldings. So in a BWR the pressure is lower, so cost of the construction is reduced. It eliminates the use of heat exchanger, pressurizer, circulating pump, and the piping. Therefore the cost is further reduced. Okay, so here you see this is the diagram of the PWR. So in a PWR, here you see this pressurizer is there, this heat exchanger is there, circulating pump is there, means coolant pump is there. Okay, and the piping is also there. So these things are increase the cost. But in a BWR only reactor is there, then steam turbine, condensers, and the feed water pump is there. So cost is reduced compared to the PWR. The thermal efficiency of this reactor plant is considerably higher than the PWR.
So in a PWR, efficiency is 20%. Okay, here the efficiency is 30%. Means efficiency is improved by 10%. The temperature remains low for the given output conditions. Next one is the disadvantages. First disadvantage, the steam leaving the reactor is slightly radioactive. Therefore, light shielding of turbine and the piping is necessary. Means we need to shielding the full plant. Okay, so in a PWR, just we need to shielding the primary circuits. Okay, but in a BWR, we need to cover the full plant by the shielding. Full plant means we need to cover all the components by the shielding, that is the reactors, turbine, condensers, and the pump. It cannot meet the sudden changes in a load on the plant. Means if the load is changed, means electric load is increased or decreased. So plant are not able to give the quick response. The power density of this reactor is nearly 50% of PWR. Therefore, the size of the vessel will be considerably larger compared with the PWR. It's require enriched uranium as a fuel. Means we are not use the natural uranium, we are use the enriched uraniums as a fuel. So thank you for watching this video. If you learn something, then like the video and share. ओके सो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे PWR, दैट इज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.